Good morning, students. I hope you're all fine. Good morning, ma'am. All right. So we'll Good just wait. afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon, भी हो गई. So we'll wait for a few minutes, right? We can wait for others to join in and then we can begin. So in case you're interested, we can just, continue from the discussion we were having yesterday, about arts versus sciences, the debate about what is preferable, right? What society prefers. Okay, so it can be just a group discussion session. All right. So yes. So do you want a few minutes to think about the relevant points, or we can start right away? So for those of you who were not here yesterday, I'll just repeat. So कल हमारी बात हो रही थी about, I think I asked everybody to give me suggestions about what changes they want to see in the education system, right? So most of you had very good suggestions, right, about teaching methodology या क्या जैसे more flexibility होनी चाहिए. There should be less focus on rote learning, more on practical, right? Most of you wanted this, that हमारा practical oriented ज़्यादा होना चाहिए, theoretical कम. And उसी से ही within that conversation, we just got to this topic of, arts versus sciences, engineering and humanities, yeah, let's say BTech and BA, सारी ये वाली degrees, and what are the differences and what is the difference of the society's perception about the same, right? So I think this is a very good topic for discussion and we all have a lot to learn about it. So I would give you just 2 minutes, right? You can think of on the topics or think on the various points that you can share. आप थोड़ा सा अपने जैसे ना views, you can just gather your views, just organize them, and then we can share them all one by one. ठीक है? So is that a good idea? So is it clear to everyone? I will write it in the chat as well. So I hope it is clear to all the students here, right? Yes, Aditya, Amit, Arvind, I hope you got the idea. Please explain again, ma'am. All right, so विशाल हम जैसे बात करेंगे, अगर आप तो कल क्लास में थे, राइट? तो हम बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी कैसे डिफरेंटली परसीव करती है कि आर्ट्स, अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं, या ऑन द अदर हैंड कोई एमबीबीएस कर रहा है या बीटेक कर रहा है, ठीक है? तो आपको भी मतलब यू ऑल्सो इनकाउंटर दीज थिंग्स, दैट सबका इसके बारे में अलग व्यू होता है. See, some people prefer कि sciences is a good, profession and good choice. ठीक है, किसी को लगता है कि no, you should be doing what you feel interested in. Some people they force their kids to do कि नहीं maths ही करना है या engineering ही करनी है, non medical ही लेना है. तो हम इस issue पे we will have a group discussion, right? That what might be the reasons for this difference of opinion, या is it right or wrong, कुछ वैसा, ठीक है? So I hope Vishal that was clear. Yes, ma'am. All right. So अभी should I give you just 2-3 minutes? आप अपने points थोड़े सोच सकते हैं. Any incident that you faced, you can share that with me as well, right?
and then we can start with the group discussion. ठीक है बच्चे, I hope everybody is okay with the idea. So just take your 5 minutes, think on the points, and then we can begin. All right. So in the meantime, I am also jotting down few points which I can share with you, right? So I hope all of you were able to check your result, right? So yesterday some of you were unable to access. Yes, ma'am. All right. So probably that was some issue with the website. मैम कईयों का अभी भी नहीं चेक हो रहा। अच्छा अभी भी नहीं चेक हो रहा कईयों का? दैट इज प्रीटी बैड। अभी तो इट हैज ऑलमोस्ट बीन 2 days है ना आपका रिजल्ट अनाउंस हुए तो। यस Okay, so Nikhil, आपने did you call somebody at the university? Yes, ma'am. So what did they say? Ma'am, he said that, ma'am, the site was still updating, so you get your result after 4 to 5 days. Oh, so you have to wait for 4 to 5 days to see your result. Yes, ma'am. That is a long wait, especially when you know that the, other students they already know the result, right? Yes, ma'am. So anyway, I think the best you can do is wait, right? Just keep checking it once or twice. Like once in a while, like let's check it in the morning and then once in the afternoon, right? Don't worry too much about it. So I hope your exams went well otherwise. So yes, Yes, ma'am. all right. So and for everybody else also, the result was okay or something unexpected? मैम मेरा अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, unexpected I'm unaccepted. in a positive way or a negative way? That matters. नेगेटिव है। Oh, I'm positive. okay. So kind of a mixed experience for everyone, right? So at times you feel you did better, right? At times you feel it was not as good. Okay, so I hope it is positive for more students. And in case you are feel that it was not as good, you can analyze. ठीक है, अब अगर आपको याद होगा कि आपने कैसे attempt किया था and what is the result that you got, so just you can compare it and you be like better मैम prepared for ऑनलाइन next time. आपके जो बेटा जिसमें ऑफलाइन हुए रीपेयर आई ना वो ऑनलाइन था। या ऑनलाइन हुए थे? मैम केमिस्ट्री का ऑनलाइन हुआ था
बाकी राइट सारे ऑफलाइन से। ओके केमिस्ट्री का तो आपका अभी लेटली हुआ था ना जो सा ऑनलाइन है उसमें रीपेयर आई है। अच्छा ऑनलाइन वाले के रीअपियर आ गई दैट इज सरप्राइजिंग एंड ऑफलाइन वाले की यस मैम। चेकिंग चेकिंग ठीक हुई या ऑफलाइन एग्जाम्स की मैम ओपन बुक था वो। ओके ऑफलाइन वाले तो मैं पास ही हूँ सभी में। Okay, so I think maybe they have a different criteria to check open book जो examinations हो रहे हैं, right? Maybe that criteria is more strict than usual because they say as teachers we feel that if it is open book, so आपका attempt should be close to perfect, right? Without any mistakes. So हो सकता है this is what the examiners also thought or the people or the teachers who checked your answer sheets, right? बाकी you can just go through the question paper again, clear your doubts and make sure कि आप next वाले अपने attempt के लिए fully prepared हो, right? And that you are able to score well. Okay, so I hope you are ready with for the group discussion. हाँ जी बच्चे. Should we begin? Yes, Jaswinder, Sudhanshu, Vishal, Karan. I hope you guys thought of the relevant points. हाँ जी, yes or no? मैम ये हनुमान की गुरप्रीत की विशाल की प्रेजेंटेशन रहती है गुरप्रीत की और किसकी प्रेजेंटेशन रहती है हरमन विशाल Okay, so Gurpreet did inform me that he is unable to attend the class. So Harman and Vishal, would you like to present? नो मैम प्रेजेंटेशन उसकी है तो मैं वो बोलेगा फिर इकट्ठे Okay. जब होंगे तो Okay, okay. So we can have that tomorrow. मैम ये बहुत वेट करा रहे हैं यस मैम See, Sonali is so eager to see your presentation, right? And I am eager as well. यस But I think Sonali, we can't help it since Gurpreet was not feeling well, right? So what we can do is wait for the next class. So, you know, this reminds me of one play which I read in my master's. So this is, it's Waiting for Godot or Godot भी कह देते हैं. So it's a very important play. तो that play is about, you know, जैसे जिस टाइम पे वो लिखा गया, it was post war period, दोनों world war हो चुके थे. So people had lost faith in humanity, they had lost faith in, let's say, God, और कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, something like that ना. तो वो जो notions होते हैं, see you if you witness a war as bad as world war, तो आपका थोड़ा ये वाले सारे notions they are shaken. ठीक है, आपको लगेगा शायद भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता. So this play is about how two people are waiting for one person who never shows up. तो उसमें यही सारे प्ले में ना बड़ा थोड़ा वियर्ड सा प्ले है, बट उसमें यही होता है कि दे आर वेटिंग फॉर गोडो, दे आर वेटिंग फॉर हिम कि ये कोई पर्सन है गोडो हु वुड कम, बट ही नेवर एंड्स अप शोइंग एंड द होल प्ले इज जस्ट अबाउट दैट हाउ दे वेट एंड हाउ दे पास देयर टाइम. So it is just about, you know, how we in life, we wait for next moments, maybe next best moment. Similarly, in this class now, we are waiting for Harman, Vishal and Gurpreet to present their PPT, right? So that is just a very funny analogy that I could draw. All right, so bachos, let's start with the group discussion then. Hanji, are you ready? So how do you want to go about it? Should I like take your name and then you can share your viewpoint? Is that a good idea? हाँ जी, बताओ बच्चे. Or otherwise I'll just start from like alphabetical order.
in the whatever order is being displayed here. So, okay, let's start with Arvind. Yes, Arvind, am I audible to you? Yes, ma'am. All right. So, Arvind, what is your view on this topic? Whether this whole debate about humanities better है या engineering better है? Society का आपको क्या लगता है कि what is the idea? Ma'am, both humanities and science is no longer the exclusive domain of scientists and is more present than ever in our day-to-day. Technology development is continuously dazzling, and its impact on human development is giving to rise an increasing need for change in educational models. All right. And the need have changed, and this implies that the educational method and the content should change according to the new demands of society. What does society need? Many of the skills and competitors and that an education form requires are very different to those currently taught in most of the schools worldwide. All In many right. countries, we see that there are signal showing the beginning of the change, at least an attempt to introduce new methods of studies, changes in curriculum contents, and the incorporation of tools, methods related to new technologies and to the information society. But are we addressing this educational revolution in a right way? I cannot help but wonder if we are not making the same mistakes we made in the past. Because yes, we live in the knowledge society, but what are short of knowledge? All right. But so, no, I asked you whether you think there is a difference of opinion regarding humanities and sciences as a choice of profession. Yes, ma'am. So, do you agree that there exists a difference? Yes, ma'am. Exists a difference which based upon the interest of student. All right. And how about, how parents perceive it and whether any profession is considered better than the other? So, what is your idea about that? No, ma'am. You say there is no difference, or Ma'am, has a difference, but I don't know about more information about humanities. I know about science. okay. So see, humanities has all these subjects which are, more focused on human beings. Like we have psychology or let's say geography, right? We have the languages in humanities. Then we have, let's say painting, arts, डांस ठीक है तो ये सारे जो होते हैं ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स काउंट होते हैं which do not fit clearly in the field of let's say non-medical medical right so and even commerce so ये जो बाकी सारे mixed subjects हैं they come within the field of humanities right so even when you had to make a choice in your class 11th about what field to pursue no doubt some of you might have been very clear कि यही करना है किसी को confusion भी हुई होगी and people on top of that must have given their own suggestions as well so I want you to revisit that time कि आपने तब क्या notions सुने थे क्या बातें सुनी थी you know how most people approach this thing and just share that with me ठीक है so okay Harman would you like to share your views next I think there is a lot of difference between humanities and science, as a science is that as people think that science is only for students who is good in studies,
uh, society also believe that people who choose art stream or uh, commerce, they are not capable of doing science also, but they can't think that people that student can choose their streams uh, as what they want to do in future. Suppose if a person want to become a cook, he will choose in a if he want to go in a hotel line, he will choose arts, not science. So people think that uh, whoever choose the science subject is a intelligent student, and the other one is not good at studies. Even I also face this problem because I want to choose commerce in class 11th, but my parents forced me to do non-medical, as they also believe that non-medical is good for the uh, good for good for me in future, but All right. they cannot see my interest. Okay. So I hope you So have. this is the difference, हम्म I think. तो अभी आप enjoy कर रहे हो being in BTech or not? हाँ जी हरमन. Yes, ma'am. अभी so are you happy being in BTech course? Yes, ma'am. All right. So because that is important. So no doubt you might have faced certain problems back then. But फिर क्या होता है कि gradually your interest develops in whichever field you take up, right? So that is very important that yes, you should enjoy what you are doing at the moment, ठीक है? नहीं तो अगर आपके माइंड में हमेशा रहेगा ना कि मैंने वो करना था, मुझे करने नहीं दिया, I wanted to do that, then you are unable to give your 100% to what you are doing in the present moment. So yes, your answer was really good that there is this notion. So you touched upon this stereotype which people have कि जो bright students हैं they should only pursue sciences, ठीक है, medical या non medical, and जो थोड़े से average हैं let's say they should pursue commerce, and जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या कुछ भी they should take up humanities. And I agree with you that I also find this notion very stupid because the choice you make, it should be dependent on your interest, number one. Number two, also your aptitude. अब aptitude बेटा I think मैंने पहले भी क्लास में बात की थी, aptitude is your natural ability to do something, ठीक है? अब किसी में naturally उनका aptitude for maths होता है, किसी में नेचुरली लैंग्वेजेस में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, दैट कम्स नेचुरली टू देम. हाउ? बिकॉज शुरू से मे बी उनको उस साइड पे इंटरेस्ट था, उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया उस साइड पे, उनकी उसी टॉपिक में ज्यादा लर्निंग भी अच्छी हुई, ठीक है. अगर आपको लेट से ज्योग्राफी नहीं पसंद, आपने स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ी है, सबने पढ़ी है 10th तक, तो आपको उसके अभी ना राइट नाउ फैक्ट्स कुछ याद नहीं भी होंगे बिकॉज आपको इतना इंटरेस्ट नहीं था उसमें, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड इफ यू वर रियली इंटरेस्टेड इन लेट्स से हिस्ट्री, तो आपको अभी तक हिस्ट्री की क्लासेस याद होंगी कि 9th में क्या पढ़ा, 10th में क्या पढ़ा, बिकॉज इट इज लिंक्ड विद योर इंटरेस्ट वॉज देयर इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपने उस क्लास में ध्यान भी ज्यादा दिया, उसको शौक से पढ़ा, आपकी वो लर्निंग भी ज्यादा लॉन्ग टर्म हुई, ठीक है. इसीलिए कई चीजें में अब हमें नहीं याद रहता, वाई? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं था, तो हम अपनी तरफ से भी 100% एफर्ट नहीं डालते. So this is how aptitude and interest are linked, and your choice should be based on both of these. क्योंकि कईयों का क्या होता है कि ठीक है आपको बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, यू से आई वांट टू बी अ डॉक्टर, बट आपसे उतना टाइम पढ़ा ही नहीं जाता, आपसे वो उतनी लॉन्ग आवर्स के लिए बैठा नहीं जाता, आपके में उतना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, या आपको साइंस उतनी अच्छे से समझ नहीं आती. तो इसमें पता क्या होता है, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन योर एप्टीट्यूड एंड योर इंटरेस्ट. सो making a choice based on only one factor is not a wise choice. You should always consider both the factors. कई लोग होते हैं, they are so passionate, चाहे उनका एप्टीट्यूड ना हो, किस तरह धक्के से लेट से अगर बाकी लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो 14 आवर्स पढ़ेंगे, 15 आवर्स पढ़ेंगे, एंड दे वुड गेट थ्रू, राइट? Because they are so passionate about that particular subject, even if let's say their memory is not that good, उनको चीजें भूलती हैं, they would practice more, they would write more, and they would get through.
So yes, that was a very good point made by you, Harman, that जो ये society में stereotypes exist करते हैं, उनको stereotypes कहते हैं, right? कि कुछ without any basis in logic, they are just some thoughts, some ideas which are continuing from a long time and they continue to persist. तो अब जो ये वाला आपने बताया होगा ना कि आर्ट्स वाला ह्यूमैनिटीज, so this was true even when our parents were in school, right? When they had to pick their subjects, तब भी यही सारी बातें चलती थी. So just stereotypes are some of these notions which just continue to persist and it is very tough to break them. So all right, now let's talk to Jaswinder. Okay, Jaswinder, what would you like to share on this topic? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਬੀਟੈਕ ਬਾਰੇ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਆਲ ਰਾਈਟ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਇੰਸ ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਟਰ ਜੌਬਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਪੇਇੰਗ ਆਰਟਸ ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆ ਆਰਟਸ ਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀ ਮਨਾਟੀ ਵੀ ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਅਰਨਿੰਗ ਵੈਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟਸ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ so I think it is more about how well you find your opportunities rather than कि जिवें अपने नोशन बने हुए कि साइंस कर लो अगे जॉब वधिया मिल जाएगी इजीली मिल जाएगी ठीक है हाँ all right so Jaswinder that was a good point made by you so okay now let's hear from Nikhil so Hanji Nikhil what would you like to say yes Nikhil Sushant Sonali anybody now you can just ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ unmute ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ whatever is your viewpoint मैम की जॉब मेरा हाई हाँ जी सुशांत आपकी ना मुझे आवाज नहीं आ रही आई थिंक आई डोंट नो इफ इट इज अ नेटवर्क इशू ऑन माय एंड और योर हाँ जी सुशांत आप बेटा चैट में भेज सकते हो सुशांत की आवाज बाकी सबको आ रही है No. All right, students, there was some network issue. So I was just out of the meeting for about, let's say, 4 to 5 minutes. So Sushant, can you repeat? ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ?
I will just check if I can hear you right. Yes. So am I audible to you all? I mean audible clearly? Ma'am, Yes. voice is cracking. All right. Sushant, no, Yes. Ma'am, voice is cracking. Ma'am, now? अभी सुशांत आ रही है. हाँ जी. Now can you just repeat आप क्या बता रहे थे पहले? Oh, I can't hear you again. I think ये ना मेरी साइड पे नेटवर्क Ma'am, इशू है. yes, ma'am. जैसे मैम write in the chat box. Chat box में लिख दो. Yes, that would be good. Mention it here. See, this is actually, I believe this is the biggest drawback of, online mode, that a network is not always good. पेन मैम कुछ नहीं होता मैम. It's depend on All right. So you say it is not dependent on the stream. Okay, very good. So that is a good idea that it is. So Sushant says it is not dependent on the stream as much as it is dependent on how focused you are, right? So if a person is yes ma'am. focused, है ना, so they can do well in any field they choose. मैम जैसे मैम फॉर एग्जांपल मैम यूट्यूब पर है आशीष चंचलानी Right? द मीमर मैम जैसे कह सकते हैं. हाँ जी. मैम जैसे द आशीष चंचलानी द मीमर मैम वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और साथ साथ में मैम वो यूट्यूब चैनल All right. Even अगर आप जैसे if you are fond of watching stand-up comedians, so many of them are yes from ma'am. Yes engineering background, right? But they are at the same time exploring their yes other passions as well. ma'am. But at the same time, we also agree that our parents' generation, even your parents, they still have that fear and they want that followed old pattern only के science ले लो या ये ले लो है ना इसमें आगे jobs है. They are not so open to these ideas. मैम यस मैम बट मैं ऐसे भी होता है ना घर पर मैम किसी ने एक ने रख ली ना आर्ट नॉन मेडिकल फिर मैम वो कहते हैं ना उसने रखी है तो आप भी रखो. Okay, so yes, I agree with you that there is this, comparison also taking place, right? So either your own siblings या आपके cousins या some family friends के बच्चे, so yes, ये भी हो जाता है कि उसने तो medical रखी है, तू भी medical रख ले या उसने non medical की है, तू भी medical non medical कर है ना, something like that. मेरे साथ हुआ है मैम इसलिए बोल रहा हूँ. मेरे साथ So yes, a lot of you can identify with this as well, right? So Sonali, you wanted to share something?
नो मैम, जो मेरे दिमाग में था वो तो सबने पहले ही बता दिया, मेरी सबने लास्ट में टर्न आई। नो नो, यू माइट हैव समथिंग न्यू, आप भी बता सकते हो। बस मैम यही बता सकती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उसने ये लिया है, तू भी यही कर। We all go through that तो once मैंने or भी इसलिए हाँ जी। बीटेक और नॉन मेडिकल किया। Okay, okay. So I just, I hope that most of you are happy doing what you are doing right now, no matter how you were made to pick this field or make this choice, right? And okay, so I do agree with your viewpoint, okay, that it is dependent on you. But let me tell you one thing, that our parents are not completely wrong, right? When they say कि इसमें ज़्यादा jobs हैं, because that is also true. अगर हम थोड़ा वैसे अपना देखें ना कि हमारा जो employment sector है, how it is made. So yes, it is true that it is easier for, somebody with an MBBS degree, कोई doctor है, क्योंकि डॉक्टर्स इंडिया में कम हैं, तो डॉक्टर्स को ज्यादा इजीली जॉब्स मिल जाती हैं, एंड येस दे आर वेल पेइंग ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज देयर वर्क इज सच। सिमिलरली लाइक यू ऑल विल बी इंजीनियर्स, तो बिकॉज इंजीनियरिंग का ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए इसमें जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, ठीक है, अगर आपने इफ यू वर टू अप्लाई अदरवाइज ऑल्सो। बट येस, फॉर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज यू डू हैव टू यूज योर ओन आइडियाज, यू हैव टू मेक योर ओन वे। उतने ज्यादा एवेन्यूज एक तो या तो नहीं है, या तो उतनी अवेयरनेस नहीं है अबाउट द एवेन्यूज, राइट? एंड ऑल्सो आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट द पे गैप, दैट people with a science degree they get paid more, people with arts degree not so much, क्योंकि ये ना एक हमारा स्ट्रक्चर ही बना हुआ है सोसाइटी का। एंड द रीजन वाई आर पेरेंट्स बिलीव दैट इज बिकॉज देयर इज अ सिग्निफिकेंट पे गैप बिटवीन पीपल विद साइंसेज और विद ह्यूमैनिटीज, ठीक है, जैसे स्टेम कहते हैं, मैं इधर आपके लिए चैट में भी लिख देती हूँ। so this acronym is used very often, STEM. So this is for science, technology, engineering and मैथ्स, या कहीं पे इसको मेडिकल भी कह देते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, इसके लिए ये वर्ड यूज होता है स्टेम फील्ड्स, ठीक है। तो स्टेम फील्ड्स का तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ज्यादा है, पे इज मोर, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई आवर पेरेंट्स आल्सो वरी एंड दे पुश यू टू टेक दिस फील्ड, राइट? बट लेट मी टेल यू, you won't regret this choice, you would definitely enjoy it, and once you are grown up, तो आपको जो आपका फील्ड होगा, जैसा आपका वर्क होगा, you will enjoy that, you will really like it। क्योंकि देखो वो एक गैम्बल तो है कि आप अपनी मर्जी से कोई फील्ड ले रहे हो, अगर उसमें आगे ऑप्शंस ना हो। जैसे इवन जो ये यूट्यूबर्स हैं, दे टुक दिस गैम्बल, दे टुक दिस रिस्क ऑफ स्टार्टिंग इट आउट, ठीक है, बट इनके केस में क्या था, इनके केस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं थी ज्यादा, right? So you just need a good PC, maybe a good, all those infrastructure.